अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सलमान जैदी आपका प्रेजेंटर। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव शेल्टर। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्लास 10th फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 10 to 18 ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है कि पेपर का 80 to 90% पार्ट इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको आएगा। ले आए स्टार्ट लेते हैं। नंबर 10 हमारे पास है जनाब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड, व्हाट्स स्टेट जॉल्स लॉ, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, what is meant by diffraction of wave, write down two characteristics of simple harmonic motion, prove that v is equal to f lambda, define the reflection of wave, what is meant by compression, define mechanical waves and write name of its types, define wave, drive a relation between speed, frequency and wavelength, what is meant by ripple tank, what are the damped oscillations, define quality of sound, define spring constant k and write down its unit, define restoring force, how does loudness depend on the area of the vibrating body। चैप्टर नंबर 11 जी हमारे पास है साउंड। उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, define pitch of sound, what is the relation between pitch and frequency of the sound, calculate the frequency of a sound wave of speed 340 meter per second and wavelength 50 meter, what is audible frequency range for human ear, write two uses of ultrasound in medical field, is meant by loudness of sound, define reflection of sound, what do you mean by reverberation, what do you mean by reverberation of sound, what are the ultrasonic waves, define quality of sound, how does loudness depend on the area of vibrating body, describe how the sound is produced, define loudness, on what factor does the loudness of sound depend, define sound wave and write an example, what is unit of loudness, define it, sound is a form of wave, list the reasons to support the idea that sound is a wave। चैप्टर नंबर 12 है जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इफ़ p इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, f इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मिरर इज़ कनकेव, फाइंड q, व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल एंगल, राइट टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ड्रा द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, define power of lens and write its unit, how can you define optical fiber, define refractive index, write the types of endoscope, write two characteristics of focus of a concave and convex mirror, define mirror formula, define irregular reflection of light, differentiate between the focus of convex mirror and concave mirror, differentiate focus of a concave and convex mirror, what is meant by distance formula, state the law of refraction, describe the conditions for total internal reflection, what is meant by near point of eye, what is the difference between principal axis and principal focus। चैप्टर नंबर 13 है जी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेट जॉल्स लॉ, डिफाइन करंट एंड राइट इट्स यूनिट्स, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट, draw the ray diagram of reflecting telescope, define electric field intensity and write its unit, define the SI unit of capacitance of a capacitor, what is the difference between conductors and insulators, define SI unit of capacitance, define Coulomb's law, what is the difference between variable and fixed type capacitor, what do you know about paper capacitor, write two characteristics of electric field lines, define potential difference and write its formula। चैप्टर 14 है ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिफाइन यूनिट ओहम, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक, differentiate between ohmic and non-ohmic material, what is the difference between conductors and insulators, how many watt hours are in 100 joules, define electromagnet,
Differentiate between direct current and alternating current. Define resistivity, write its formula. Define electromotive force and write its unit. Define electrical power and write its formula. What is the cause of flow of current in electrolytes? चैप्टर नंबर 15 है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेट लेंज लॉ, राइट डिफरेंस नेम, डिफरेंट डिफाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। What is the difference between step up and step down transformer? What is the function of relay? Can a transformer work on a direct current? Define electromagnetic induction. Write down the symbol of OR gate. What is meant by digital to analog converters? Define truth table. Define mutual induction. State the right hand rule. Write the names of logic operations. Chapter number 16 है basic electronics. इसके short question differentiate between analog electronics and digital electronics. Write down names of 5 analog electronics and digital electronics. What is universal logic gate? Explain about AND gate, give its symbol and truth table. Explain about OR gate, give its symbol and truth table. Explain about NOT gate, give its symbol and truth table. NAND is a universal gate, give its symbol and truth table. Find digital electronics. What are logic gates? चैप्टर नंबर 17 है जी हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय टेलीकम्युनिकेशन? व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा मैनेजमेंट? राइट टू सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। Define software. Define ICT. What is meant by compact disk? Define telecommunication. Define piracy and floppy disk. Name at least 4 browsers being used nowadays. Define word processing. Write the storage capacity of compact disk and DVD. Differentiate between RAM and ROM. Differentiate between data and information. Write down name of 4 electronic devices. What is internet? Write 2 advantages of electronic mail. Write the names of 2 services of internet. चैप्टर नंबर 18 है जी हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? डिफाइन कार्बन डेटिंग। राइट 2 characteristics of beta particles. Define isotope. Describe 2 uses of radioisotopes. What do you mean by background radiations? Write down 2 uses of radioisotopes. What do you mean by nuclear transmutation? Write the difference between fission reaction and fusion reaction. What is meant by cosmic radiation? What is the difference between atomic number and atomic mass number? What do you mean by radioactivity? How can you make radioactive elements artificially?